Now let us look at the methods for valuation of intangible assets under the income approach. तो इनकम अप्रोच के अंडर में कौन कौन से मेथड्स हैं? नाउ रिमेंबर हियर द डिफरेंस जो हमने अभी तक डिस्कस किया था. इनकम अप्रोच के जो मेथड्स है अंडर द प्रीवियस डिस्कशन with regard to the other assets, with regard to the value of equity, with regard to the value of enterprise, जो हमने डिस्कस किया, तो उसमें आपको याद होगा दो मेथड थे अंडर द इनकम अप्रोच. देयर वर टू मेथड्स अंडर द इनकम अप्रोच. व्हाट वर दोज टू मेथड्स? द फर्स्ट वन वाज इनकम कैपिटलाइजेशन मेथड and the second was DCF, discounted cash flow method. And remember, both of them are also used in the context of the valuation of intangible also. We will now understand that step by step. So primarily there are five different methods, five different broad methods which are there for the valuation of intangible assets. So what I will do, firstly I will discuss briefly, or rather I will introduce all these five methods one by one, and then we will have a greater longer discussion on each of those methods as to how do they work, how are they used. अब देखिए पहला मेथड क्या है? पहला मेथड है रिलीफ फ्रॉम रॉयल्टी मेथड, RFR, रिलीफ फ्रॉम रॉयल्टी मेथड. अब देखिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत सिंपल है. इसका मतलब ये है कि आपके बिजनेस में, लेट अस से फॉर एग्जांपल यू आर पेप्सी and you want to do the valuation of Pepsi as a brand. So Pepsi as a brand is an intangible asset, and you want to do the valuation of Pepsi as a brand. So how will you do it? Under the relief from royalty method. अब देखो इसको वैल्यूएशन करने का क्या तरीका है. अब आप ये अज्यूम करके चलिए that you don't own Pepsi as a brand. You are a Pepsi company, but you don't own the brand Pepsi. So if you don't own the brand Pepsi, that means for running your operations, you will need to hire this brand from somebody. Okay, I'm giving you an example of brand, but it can be any other intangible assets. So अगर मैं पेप्सी हूँ और मैं पेप्सी ब्रांड को ऑन नहीं करता हूँ और ये मुझे ब्रांड किसी और से लेना पड़ रहा है, तो जो लेना पड़ रहा है उसके लिए मुझे कितना रॉयल्टी देनी पड़ रही है, कितनी रॉयल्टी देनी पड़ सकती है. नाउ दिस इज व्हाट you will need to calculate. This is where you will need to use your judgment, your technique, your knowledge, your understanding, your expertise. कि अगर ये जो इंटेंजिबल है, अगर मैं इसको कहीं से रॉयल्टी पे लूँ तो मुझे कितना रॉयल्टी देना पड़ेगा. तो you will find out that I will have to pay so much of royalty, right? Now what you do? So आपने वो you have taken that brand on lease, and for that lease you are paying a royalty. So समझो आपने 10 साल के लिए वो ब्रांड को लिया, तो 10 साल के लिए आप अगर ब्रांड को लेते हैं तो 10 साल में कितना आप पे करेंगे रॉयल्टी, और वो जो 10 साल में आप रॉयल्टी पे करेंगे उसका जो प्रेजेंट वैल्यू है उसका टोटल करेंगे. दैट बिकम्स योर वैल्यू ऑफ पेप्सी एज अ ब्रांड. एंड व्हाई इट इज कॉल्ड एज relief from royalty? And very simple, you can understand it very easily. It is called as relief from royalty because since I own Pepsi as a brand today, I do not have to pay the royalty. That means I am getting relief from paying the royalty, and that is why this method is known as relief from royalty method. यानी कि जो इंटेंजिबल आपके पास में है, आप उसको अज्यूम करते हैं कि वो आपके पास में नहीं है, आपको किसी और से लेनी पड़ रही है, और उसको लेने के लिए जो आप रॉयल्टी भर रहे हैं उसकी जो टोटल अमाउंट है और उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है उसका टोटल, दैट बिकम्स द वैल्यू अंडर द रिलीफ फ्रॉम रॉयल्टी मेथड.
अब मैंने जो देखा है इसमें कैसा क्वेश्चन आ सकता है, they can simply ask you what is relief from royalty method, and they will tell you 1 2 3 4, and one of them is relief from royalty method means the royalty that you will save because you own an asset. So that will be the right answer. Then they will give you three more other different answers, and then you will have to find out the right answer and give the answer, which I am sure with this understanding you should be able to do it very easily.